functions. This topic is the continuation of the last lecture in which we did derivative of differentiation of implicit functions. First of all, we must learn the formulas. You need to learn the formulas. Two things are required. Number one, you need to learn the formulas, and number two, conversions, which we already studied in this chapter, inverse trigonometric functions, and the links of that chapters are given below. Differential of sine inverse x, 1 upon under root 1 minus x square, where x belongs to the open interval minus 1 to 1, right? Differential of cos inverse x, minus 1 upon under root 1 minus x square. Differential of tan inverse x, 1 upon 1 plus x square. Differential of cot inverse x, minus 1 upon 1 plus x square. Differential of sec inverse x, 1 upon x under root x square minus 1, and differential of cosec inverse x is equal to minus 1 upon x under root x square minus 1. All these formulas you have to learn by heart. Let us move ahead to do questions. Question number 9. Y is equal to sine inverse 2x upon 1 plus x square. Look, you need to remember two main things. First of all, formula, and number two, conversion. You must remember all the formulas which you studied in class 11th, double angle formulas especially. Like, you know that sine 2 theta is equal to 2 sine theta cos theta, and in terms of tan, you know that this is 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. Likewise, cos 2 theta is equal to 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, and tan 2 theta is equal to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट जब भी इनसे रिलेटेड सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, मैं ये लिखती हूँ फार्मूले. आप इनको हमेशा याद रखिए, अपने पेपर्स पर लिख लीजिए, सामने दीवार पर लगा लीजिए, बट ये याद करने आपको बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दीज फार्मूलाज. ओके, नाउ अब आपको इसमें कन्वर्जन लगाना है. आपने फंक्शन को ध्यान से देखा. दिस इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. वाई आई हैव रिटन दिस. इसकी फॉर्म देखिए कहाँ मैच करती है. 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कन्वर्जन भी आसानी से लगा सकते हो, क्योंकि कन्वर्जन के बाद ही आप डिफरेंशियल करोगे. आपने x को पुट किया tan थीटा, राइट? देन यू नो वेरी वेल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 2 tan थीटा upon 1 plus tan square theta is equal to sin 2 theta. So y is equal to sin inverse sin 2 theta. आप देख रहे हैं, अब तक मैंने डिफरेंशियल का काम नहीं शुरू किया. अब तक तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के ही फार्मूलाज को यूज कर रहे हैं. साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा. y is a function of theta now, but in question y was function of x, so theta is equal to tan inverse x. ये आप अच्छे से देख सकते हो कि अगर आपने कोई नया वेरिएबल सपोज किया है, देन अप्लाई अ कन्वर्जन इन सच अ वे कि आप पुराने वेरिएबल के टर्म्स में ही लिख सकें. थीटा इज इक्वल टू tan inverse x. So y can be written as 2 tan inverse x. इस कन्वर्जन के बाद आप दोनों तरफ डिफरेंशियल करेंगे. d by dx of y is equal to twice of d upon dx of tan inverse x. This is 1 upon 1 plus x square. So your answer is dy by dx is equal to 2 upon 1 plus x square. अगर हम ध्यान से फिर से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो इतने काम में तो डिफरेंशियल था ही नहीं. डिफरेंशियल तो आपको बस फार्मूला डायरेक्ट याद होना है और आप डिफरेंशियल दोनों साइड का करेंगे, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला. तो यहाँ पर हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं
कि हमको फार्मूलाज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सब हमें बहुत अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, राइट। अगेन इन द सेम वे y is equal to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square, where x lies between minus 1 by root 3 to plus 1 by root 3, right. This is the range of x you are given. इसका मतलब ये है कि इस रेंज में ही ये फंक्शन मेरा डिफाइन है. Anyway, put x is equal to tan theta. Why so? You know very well, 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta is tan 3 theta. Again I will say, you need to remember all the formulas. Class 11th की बुक उठाएं, डबल एंगल और ट्रिपल एंगल सारे फार्मूले आप लिखेंगे. 1 minus 3 tan square theta, tan inverse tan 3 theta. As you have done earlier, theta is equal to tan inverse x. Then y is equal to 3 tan inverse x. dy by dx is equal to 3 upon 1 plus x square. Right? Next question. Y is equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. You know, we can put x is equal to tan theta, where theta is equal to tan inverse x, so that on simplifying the function 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta, it becomes cos 2 theta. As we discussed in last question, 2 theta, right. Cos inverse cos x is equal to x only. Y is equal to 2 tan inverse x, because we again write theta as tan inverse x. Differentiate both sides with respect to x. 2 tan inverse x, and differential of tan inverse x is 1 plus x square. So simple. Again, what you need to learn? Conversions. Conversions are very important for this exercise, otherwise you need to just apply direct formula. Y is equal to sine inverse 2x under root 1 minus x square. For this function, for this conversion, put x is equal to sine theta. You can also put cos theta, right? X is equal to sine theta, then theta is equal to sine inverse x, which we will use in last step, right? 2x upon 2x under root 1 minus x square, 2 sine theta square root of 1 minus sine square theta. 1 minus sine square theta is cos square theta. Square root of cos square theta is cos theta. So it will become 2 sine theta cos theta. And 2 sine theta cos theta is sine 2 theta. This gives you 2 theta, and theta is sine inverse x. Y is equal to 2 sine inverse x. Then dy by dx, differentiate both sides with respect to x, d by dx of sine inverse x. And remember, differential of sine inverse x under root 1 minus x square. Y is equal to sec inverse 1 upon 2x square minus 1. For the conversion of 2x square minus 1 or 1 minus 2x square, always put x is equal to cos theta. Why so? X is equal to cos theta, theta is equal to cos inverse x. So y is equal to sec inverse 1 upon 2 cos square theta minus 1. 2 cos square theta minus 1, ये आपको जाना पहचाना फॉर्म लग रहा है. दिस इज cos 2 theta. 1 upon cos 2 theta is
sec 2 theta. And once again I am going to tell you that x is the range. आपको इसका भी कुछ नहीं करना है. I am not going to elaborate this. 2 theta, right? Sec inverse sec 2 theta is 2 theta and theta is cos inverse x. Y is equal to 2 cos inverse x. So when we differentiate both the sides, differential of cos inverse x is minus 1 upon under root 1 minus x square. So it becomes minus 2 upon square root of 1 minus x square. That's all for this exercise today. I hope you understood these questions. I skipped 2 questions. You do yourself, and there are many more questions which are to be done. So these are only sample questions. इनको करने से केवल हमारा काम पूरा नहीं होता कि हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली. Do it again and again, right? Till then, bye bye.